Okay, firstly introduce myself. My name is Don sir. People say me, I'm Don of Physics, and I'm from Kolkata. You can see me. I'm at here. Okay, and few things we're going to abide in the classroom. First, the rules are this: कि I have to remember my age is 16. Don't try to act like 61. Concept clear? So don't try to be 61 like it. This is my number one rule. And my age is also 16. No, I'm 1 year older than you. My age is 17. So what we are going to achieve is that we are a team. ठीक है? আমরা একটা টিম হিসেবে ওয়ার্ক করব. We are a team. We are going to will try to win the race. What is the race? How many people are sitting for JEE? 1, 2, 3, 4, 5 people, 6 people, and the rest are NEET. So the basic physics will be same for everyone. Okay, so there should not be any type of misconception that physics is different for different people. Then how we will distinguish between them? पहला बात ऐसा है कि वो मटेरियल में डिफरेंस आएगा. मैंने जो मटेरियल सप्लाई, जो whatever material I am going to supply you, that will be different. तो मेरा काम है, my job is to simplify all the things. The basic physics we are going to learn from the classroom. So जो practice जो है वो अलग होता है. First concept is clarified to everyone, right? Is there any Newton's law for medical and another Newton's law for IIT? Right? Is there any new chapter called friction in IIT JEE and another chapter friction in NEET? वैसे हम लोग friction नहीं बोलेंगे, हम लोग friction बोलेंगे. Right? So I have to learn the entire physics. पहला बात है क्या है कि मुझे पूरा सीखना है. Number one. Number two, it was number two. Number one is what? Don't try to act like 61. Be like 16. पहला रूल. दूसरा रूल मैंने क्या बोला? I have to teach everyone same, right? Because I'm a physics teacher. So where the distinction will come? The material I'm going to supply दोनों के लिए अलग होगा. नहीं, 80% सेम होगा. जेई के लिए 20% एक्स्ट्रा करना पड़ता है. I'm telling from my knowledge level. ठीक है? So 80% same material and 20% different. Rule number 2. Rule number 3 is that you will be free people. Free people means meaning of free money. J, I am free to ask question, every question and any question. Okay, and I love to answer people. I always love to answer people because I was not at all a good student at my time. Yes, I've got a lot of marks in life, but बहुत पढ़ के मुझे नंबर मिला था. Okay, मैंने बहुत स्टडी किया. I had studied a lot, then I have got number. And fortunately, this team contains 95% of the people. We are people with less talent. Only 5% people are there who have talent. ठीक बोलছি আমি? Am I right? So never think that कि other people are very good people, very good students, right? So maximum people are general students. So here there are maybe 30 students, right? So out of 30 students, how many talented people should be there according to the statistics? 100 में 5, 30 में 1.7. That is, there will be two different type of people. We all are similar people. Follow? It is rule number 3. So what I'm telling as a rule number 4, देखो हर कोई बच्चा मुझे पे कर रहा है. Everyone is paying me, right? So I have to take care of everyone. So when I suppose I have understood something, मुझे कोई क्वेश्चन पूछा और मुझे ना वो अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो वहां पे थोड़ा मुझे सहना पड़ेगा.
क्योंकि I have to understand this is a classroom. Everybody don't have the similar level of maturity and intelligence, right? तो मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा? I have to bear a little. कि कोई पूछ रहा है क्वेश्चन. Why I'm telling, this is the rule I have seen throughout the year. कुछ बच्चे को लगता है कि मेरे लिए सर है, तू मेरा मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना. हिंदी गाना है ना, आई एम फॉर यू एंड यू आर फॉर मी, एंड देन हुक द वर्ल्ड. राइट? इट शुड नॉट बी द क्लासरूम रूल, राइट? रूल नंबर 5, प्लीज अटेंड एवरी क्लास. 2 क्लास के बाद ऐसे लगेगा, ये होता है, आबार जाबो गौरव में बाहरे, इतना धूप में बाहर जाऊंगा, ठीक है, आज के ऑनलाइन मेरे दी. ফার্স্ট কেস হলো অনলাইনটাতে তোমাকে অফলাইনের থেকে অলমোস্ট 50% বেশি ডেডিকেটেড হতে হয়. इफ यू आर नॉट 50% मोर डेडिकेटेड तो ऑनलाइन तुमको समझ में नहीं आएगा. बिकॉज हियर यू आर एट द मंदिर एंड मस्जिद, सो इट इज इजी टू परफॉर्म, है ना? वहां पे तुम अकेले हो, सो अच्छा नहीं लगेगा. सो डोंट go for online mode until unless you have means. ठीक है? देखो यहाँ से बहुत मालदा से स्टूडेंट है, फिर मुर्शिदाबाद से है, ऑनलाइन में है, बहुत सारी जगह पे है, नॉर्थ बंगाल से है, दे फ्रॉम नॉर्थ बंगाल. ठीक है? तो लोग तो यहाँ पे आ नहीं पाए. तो ऑनलाइन पीपल यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड सिंसियर. ठीक है? और ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन. आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, 12 पीपल आर देयर इन ऑनलाइन. ठीक है? So please feel free to ask me question, okay? Whatever you have problem. Concept clear? And I'm a maths teacher. Everybody understands everything from me. ঠিক আছে? আমার সেই রেপুটেশন আছে যে সবাই আমার কাছ থেকে সবকিছু বুঝতে পারে, ইনক্লুডিং ইউ. তোমরাও সব বুঝতে পারো. But you have to be free. কি বললাম আমি? You don't fear me and don't let me fear you. कि तुम्हारी तरफ मैंने देखा, मैं तुमसे नहीं डर, मैंने I don't want to fear you. Please don't make me fear you also. ठीक है? हम लोग we are a team. कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं सीधा आदमी हूँ, मुझे जब कोई ऐसे देखता है ना तो मुझे बहुत खराब लगता है. ठीक है? So let's love each other. ठीक है? I'm your teacher or you are my cheater. रखी वरना सर, you are my student. मुझे चीट मत करना. Why? I'm going to give my 100% and I want just rank from you. ठीक है? अच्छा रैंक करना है. और whatever I supply to people, please remember, मेरे पास 700 मेडिकल डॉक्टर्स है और 300 से ज्यादा IITians है. What does it mean? मैं जो पढ़ाऊंगा, whatever I'm going to supply, वहां से कॉमन आएगा. You are going to get common from there. Shantan goes to everyone. Any question, Shantan? No question. Chalo. So let's go to the study part. Acha, let us talk about class 11 syllabus first. Class 11 has 4 groups. The first group is called mechanics. देखो सबका विकास होगा, ठीक है? Everyone will understand. Please just go through. First group is called mechanics. The second group is called GPM, and the full form is general properties of matter. Third group is called heat and thermodynamics. And the fourth is called waves and vibration. Mechanics, you know, basically what is mechanics? Mechanics kaake bole? It is mere Newton's law, right? This is mere Newton's law. So we are firstly going to take care of
mechanics, and then GPM, and then heat and thermodynamics, and then waves and vibration. Write it down. লিখে নাও এই চারটি গ্রুপ আছে in class 11: mechanics, GPM, heat and thermodynamics, and waves and vibration. Okay, well, how much question they contain actually? What is the marks distribution over here? देखो IIT JEE के लिए यहाँ से from class 11 part 13 to 17 क्वेश्चन आते हैं, a minimum of 13 and a maximum of 17. और मेडिकल के लिए it is for IIT. For medical, this part contains 22 to 26 questions. Year to year vary करता है. A minimum of 22 questions from class 11 and a maximum of 26 questions. ठीक है? And IIT JEE में 30 questions होते हैं. So उल्टा होगा, right? 13 to 17 मतलब जो सेकेंड पार्ट है, क्लास 12 वाला पार्ट है, वहां से 17 to 13 क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास फॉर JEE is 30. How many questions they ask from here? 30 questions. ठीक है? And in medical there are 45 questions. So the distribution is 23 to 19. देखो ऐड करो, in both the sides you are getting 45. So फर्स्ट हैंड नॉलेज आ गया कि कहां से मुझे कितना इंपॉर्टेंस देना है, हाउ मच इंपॉर्टेंस आई हैव टू गिव टू व्हाट चैप्टर. ठीक है? सो अ मिनिमम ऑफ 13 क्वेश्चन फ्रॉम class 11 part in IIT JEE and a maximum of 70. Let me again see how many people are giving IIT. 1 2 3 4 5 6 7 people. Come beta, go there. তুমি ওখানে বসে যাও. হ্যাঁ, তোমার নাম কি? স্বাগত. কোথায় বাড়ি বেটা? সোনাপুর বাড়ি. বসো, যাও. খুব ভালো লাগছে না এসিতে এসে? কি আরাম বল, তাই না? বাইরে থেকে এসে এসিতে. তো যাই হোক, ঠিক আছে. আর মেডিকেল में how many question they ask? বলে for class 11 part they are going to ask a minimum of 22 and a maximum of 26 question. And उल्टा जब होगा तो क्या होगा? A minimum of 23, a maximum of 23 and a minimum of 19 question. This is the distribution. अभी IIT JEE में मैकेनिक्स से how many question they ask? A minimum of 4 and a maximum of 6. IIT JEE में आता है. দেখো কোনো টিচার তোমাকে এই ডিস্ট্রিবিউশন গুলো ফার্স্ট ক্লাসে বলেন না. কেন বলেন না? তারা সেটই করে না. তারা মনে করে যে আমার পড়ানো কাজ, আমি পড়িয়ে দিলাম, তুমি মাল নিজে নিজে খুঁজে বার করে নাও. কটা আসে না আসে আমি জানি না, कितना आएगा कहां से आएगा मुझे मालूम नहीं है, तुम पढ़ लो मैं पढ़ा दूंगा. It is your duty to find out things. The problem is that कि maximum people they don't know what is the weightage of the chapter. कितना मुझे स्ट्रेस देना है ना? अगर मुझे कुछ माने एक्सपेंसिव चीज खरीदना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से उसका दाम जानते हैं ना, उसके बाद what do? We earn money ना, and then we go to buy that thing, है ना? Had I ever gone to Mercedes shop? Never. क्यों? क्योंकि उसका दाम more than 1 crore rupees, है ना? मैं कहाँ पे जाता हूँ? I go to the Alto shop. मारुति सुजुकी, हम तुम्हारे हैं सनम. क्लियर? हम लोग मारुति की दुकान पे जाते. क्यों बोलो? पैसा नहीं है, गरीब टीचर हो, a poor teacher. কোনো মতে ডাল আলু ভাত জোটে. কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তুই হাসছিস কেন? ডিস্ট্রিবিউশন ডান.
तो मुझे पहले यहां से पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आएगा बोलो, 4 to 6। और अभी मैकेनिक्स में बाद में सब बोलेंगे। इन मैकेनिक्स हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? इन मैकेनिक्स देयर आर, फर्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, आज इसको पढ़ेंगे हम लोग। We are going to study this today. অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে, আমরা সবগুলোর নাম এখন বলবো না। We are not going to mention everybody's name, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहला वाला चैप्टर का नाम क्या है? Scalar and vector. The first chapter, mechanics contents, is called scalar and vector. We are going to study that. So come down and get into the study zone, ठीक है? चलो पढ़ाई में हम लोग घुस जाते हैं। मैकेनिक्स का पहला चैप्टर का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। And you know, every year in both the examinations, that is medical and engineering, they are going to ask one question from here. In each and every year, they are going to ask one question. And one question means how many marks? 4 marks. कितने marks बोलो? 4 marks. ये आएगा ही आएगा। আর obviously আমরা কমন পেতে যাচ্ছি। স্বাগত, বলো তোমার কি মিডিয়াম? বাড়িতে কি ভাষায় কথা বলো? হাই স্কুলে? হ্যাঁ, কেন আমরা মোটেও নর্মাল কথাগুলো ইংলিশে বলি না, তাই না? কোনো মেন্টাল প্রবলেম আছে, তাই না? বন্ধুদের সঙ্গে আমরা কেন ইংরেজিতে কথা বলবো, রাইট? আমরা যদি বাংলায় কথা বলি, বন্ধুদের সাথে বাংলায় কথা বলি। আর যদি আমরা হিন্দি থেকে আসি, তাহলে আমরা বন্ধুদের সঙ্গে হিন্দি বলি। কিছু লোক আছে যাদের মেন্টাল প্রবলেম থাকে, তারা ইংলিশই বলে, রাইট? So hopefully you will understand both Bangla and English, right? So we're talking in Sida English. Okay? So now let us start the chapter naming scalars and vectors. So I am not good in ulto palta talking, but I'm very good in physics. And you are going to learn that. अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना अच्छा हूं फिजिक्स में। Let's start पढ़ाई। We're studying पढ़ाशोना। चलो एसो। Now I'm coming into my zone. Come on. अच्छा, what is actually scalars? Professor, we bring every concept in life. What concept we bring into our life? But we bring all the concepts which are fruitful to our life, which are important to our life. Like, suppose I have to buy some bananas. मुझे केला खरीदना है, तो दुकान में जाना पड़ेगा। I have to go to the banana shop, है ना? और वहां पे फिर पूछना पड़ेगा क्या बोलो, कि मुझे बनाना दो। I want to buy 5 bananas, right? Do I say that in west direction? What I'm saying, আমি কি বলছি, যে আমি বানানা কিনছি, আমি বললাম দাদা 5টা বানানা দাও, but your face should be along western direction. बोले why? नहीं, ये हम लोग का फैमिली का असूल है, जो भी खरीदो, जो दे रहा है उसको वेस्ट। बोले लेकिन मेरा दुकान तो साउथ की तरह है। बोले उल्टा घूम के दो। अरे पागल ना कि रे, डू यू से दैट? नेवर ना। सो देयर आर फ्यू थिंग्स इन लाइफ जिसके बारे में जानने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होते हैं। जस्ट यू हैव टू नो द मैग्नीट्यूड एंड नथिंग एल्स, देन यू कैन डिस्कस इट एंड एक्सप्लेन इट in all ways, in every ways, ঠিক আছে? সব ভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি। These are given a special name, that is called scalars, ঠিক আছে? कुछ नाम देना पड़ेगा, যেমন ওই যে ছেলেটা বসে আছে, তোমার নাম কি? না, পেছনে यमन। यमन, why is your name यमन? कोई माने नहीं है। Parent like that and my name is Yemen. Okay, what's your name? Rinky. Why Rinky? और बाबा की शादी